Today we are going to discuss about the defects in solid state. Defects in crystal structure. Defect in crystal structure or solid. Defect in crystal structure. Any deviation from ordinary and stoichiometrically perfect arrangement of atoms. It is the deviation. It is any deviation from किससे orderly and stoichiometrically perfect arrangement of atoms. Stoichiometrically perfect arrangement of atoms. Ions or molecules in the crystal lattice is called defect. ठीक है. In perfect crystals, all the constituent particles in crystal, all the constituent particle atoms, molecules, ions are arranged in precise geometric order. In precise geometrical order, so that all lattice points are occupied as required by the geometry. So perfect geometry is maintained. And stoichiometry of the crystal is also remains same. But in real क्या होता है? Always fault. There is always fault or imperfection in their lattices. Fault or imperfection in their lattices. These imperfections are called defects. These are called as defects. Why do defects in the crystalline solid arise? Why does defect arise? Why do defects arise? This is second question. Why do defects arise in solids? Defects arise in solid. The crystalline solids are formed by cooling. They are formed by cooling a substance in the liquid state, and due to this cooling of a substance, which decreases the kinetic energy of the atom. Cooling of the substance which decreases kinetic energy of atom, molecule, ion. ठीक है. If crystallization takes place faster, if crystallization takes faster, so orderly arrangement of particle takes faster, then
defects are produced. Then defects are produced. The defects can be minimized by carrying out a crystallization at slower rate. अगर crystallization fast नहीं हुआ, अगर crystallization slow हुआ, तो there will be no defect. There will be no defects. So orderly arrangement can be maintained. ड्यूरिंग स्लो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है स्लो क्रिस्टलाइजेशन में? ड्यूरिंग स्लो crystallization after the formation of unit cell, after formation of unit cell, one single crystal, deposition of other crystal from all direction takes place regularly, forming a large crystal lattice. During slow crystallization, arrangement वैसी की वैसी ही रहती है, बट इन फास्ट क्रिस्टलाइजेशन डिफेक्ट विल बी प्रोड्यूस. अब कौन से टाइप के डिफेक्ट्स रहते हैं सॉलिड एंड लिक्विड में? डिफेक्ट्स दो टाइप्स के डिफेक्ट्स है, एक द पॉइंट और दूसरा लाइन. पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट दो टाइप्स के रहते हैं. एक तो एज डिसलोकेशन एंड स्क्रू डिसलोकेशन. और पॉइंट डिफेक्ट तो मेन है अपने को. पॉइंट डिफेक्ट में है नंबर 1 वैकेंसी और स्कॉटी या स्कॉट की, और दूसरा इंटरस्टिशियल और फ्रैंकल और इंटरस्टिशियल, और तीसरा है इम्प्यूरिटी. इम्प्यूरिटी डिफेक्ट फर्दर क्लासिफाइड इनटू सब्स्टिट्यूशन एंड इंटरस्टिशियल. सब्स्टिट्यूशनल एंड दूसरा इंटरस्टिशियल. इस तरह से हम लोग ये डिफेक्ट को ये कर सकते हैं. पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट. पॉइंट डिफेक्ट इज ड्यू टू वैकेंसी डिफेक्ट और स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट और इम्प्यूरिटी डिफेक्ट. और ये एज डिफेक्ट एंड स्क्रू डिफेक्ट. नाउ दिस पॉइंट डिफेक्ट, ये डिफेक्ट मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स लाइक एटम आयन मॉलिक्यूल इन द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, है ना. तो उसमें वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है? ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन हम लोग ये बोल सकते हैं पॉइंट डिफेक्ट में वैकेंसी डिफेक्ट. वैकेंसी डिफेक्ट में क्या हो रहा है? ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन, डिफेक्ट्स तो सारे क्रिस्टलाइजेशन के दौरान ही होते हैं. कुछ लैटिस पॉइंट्स some lattice points remain unoccupied by the constituent particle. Remains unoccupied by constituent particles. उसके बाद बोल सकते हैं इन आयोनिक सॉलिड
in ionic solid, vacancies are produced due to absence of cation and anion both. इसको बोलते हैं स्कॉट के डिफेक्ट. In these ionic solids, expected density is less than expected value. इसमें density decreases. ये डिफेक्ट्स किस में मिलता है अपने को? NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड Cl. इसमें कैटायन और एनायन की साइज क्या रहती है? दो बातें होती है यहाँ पे. डेंसिटी डिक्रीजेस, साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन सेम. साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन साइज इज सेम. जब साइज सेम रहती है तब वैकेंसी डिफेक्ट होता है. ठीक है, तब वैकेंसी डिफेक्ट होता है जब साइज सेम रहती है. अगर हमको छोटी सी डायग्राम अगर निकालना रहा तो हम लोग निकाल सकते हैं कि यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव. ठीक है, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे छूट गया. यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे एक छूट गया है ना. यू कैन रिप्रेजेंट दिस डायग्राम लाइक दिस. You can represent this diagram like this, vacancy defect. ठीक है, अब आते हैं अपन फ्रैंकल डिफेक्ट पे. फ्रैंकल डिफेक्ट अपने को बोलता है, फ्रैंकल डिफेक्ट में होता है फ्रैंकल डिफेक्ट. इसमें क्या होता है? इन केस ऑफ आयोनिक सॉलिड्स with relatively small cation, these are placed into interstitial spaces, है ना. डिफेक्ट इज ऑल्सो डिसलोकेशन डिफेक्ट. डिफेक्ट में स्मॉल कैटायन रहते हैं, एनायन लार्ज रहते हैं. एनायंस आर लार्ज और ये स्मॉल कैटायंस दे आर फिट इनटू द लार्ज कैटायंस. दिस डिफेक्ट इज द डिसलोकेशन डिफेक्ट. This defect is observed in AgCl by Ag plus ions. AgCl में कौन छोटा रहता है? Ag by ZnS, Zn plus 2 ions. This fit in interstitial position in anions. There is no change in density. Of the crystalline solid. ठीक है, उसके बाद में लेते हैं हम लोग तीसरा वाला डिफेक्ट, दैट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट. This defect arises when cation form its regular site is replaced by different cation replaced by
different elements cation. This is also called substitution impurity defect. This is also called substitution impurity defect. ठीक है, अब इसको अपन लोग बोल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रास अलॉय का अगर डायग्राम हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ब्रास अलॉय को, ये हो गए पूरे जिंक, यहाँ पे ये पूरे जिंक है Zn, ये पूरे जिंक है, यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे ये पूरे क्या है, जिंक है, ये पूरे जिंक है, यहाँ पे ये Zn जिंक है पूरे, और एक क्या है, कॉपर, एक क्या है, कॉपर। तो ये बनता है ब्रास अलॉय। और अगर अब हम लोगों ने स्टेनलेस स्टील ले लिया, स्टेनलेस स्टील में आयरन 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 आयरन, समझ लो ये Fe है, सारे Fe है, और इनके बीच में कार्बन घुस गया, ये कार्बन, स्टेनलेस स्टील अलॉय, स्टेनलेस स्टील अलॉय। ठीक है, if the impurity of cation is present in the interstitial position, that is called interstitial. Now this is impurity. This is impurity. Interstitial impurity defect changes the properties of the original crystalline solid, है ना, changes property of original crystalline solid, just the property of original crystalline solid. अलॉयज जनरली फॉर्म होते हैं इससे, अलॉयज जनरली फॉर्म होते हैं। और अपन बोल सकते हैं कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, इधर सब्सटेंसेस, इधर लेते सब्सटेंस, और इधर लेते हैं टाइप ऑफ डिफेक्ट, इधर लेते हैं टाइप ऑफ डिफेक्ट। तो KCl, AgCl, ब्रास, स्टेनलेस स्टील, जिंक सल्फाइड और ब्रॉन्ज। ठीक है, ब्रॉन्ज टाइप ऑफ डिफेक्ट, सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। ZNS स्कॉटकी और वैकेंसी दोनों भी बता सकता है ये, स्कॉटकी, स्कॉटकी डिफेक्ट। स्टील इंटरस्टिशियल, ब्रास सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट, सब्स्टिट्यूशनल
impurity defect or AGCL Frankel, KCL Schottky। ठीक है, इस तरह से हम लोग ये कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, द ट्रांजिशन, यहाँ पे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी रहता है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। The transition metals generally accommodate small non-metallic atoms. Transition metals generally accommodate small non-metallic atoms like hydrogen, boron, carbon, nitrogen in the interstitial void between the metal atoms and the compound. Is an interstitial compound. किसको बोलते हैं interstitial compound? Transition metal generally accommodate small non-metallic atom, small non-metallic atoms। कैसे, कौन से हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन in the interstitial void, in interstitial void between the metal atoms. So the compound thus forms, these compounds are called as interstitial compound। ट्रांजिशन एलिमेंट ये जो है हमेशा क्या करते हैं, ऐसे टाइप के कंपाउंड्स को अपने इंटरस्टिशियल पोजीशन में घुसा लेते हैं। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज द ट्रांजिशन कंपाउंड्स।